औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर तैयब काजी और आप देख रहे हैं कारोबार क्लिनिक का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम आपका तारुफ करवाने जा रहे हैं पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री के एक इंडस्ट्री एक्सपर्ट जो कि 15 साल से आलमोस्ट इस इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं, और उनसे पूछते हैं कि हमारी पाकिस्तान की आईटी इंडस्ट्री में अभी के क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं और फ्यूचर में क्या उसका ग्रोथ के पर्सपेक्टिव या पाकिस्तान में इसके किस तरह से रिजल्ट्स आएंगे। तो अभी हम आपकी मुलाकात करवाते हैं मिस्टर यासिर असलम से, जो कि अभी एवियन ग्रुप की एक सब्सिडरी कंपनी में एज ए हेड ऑफ बिजनेस डेवलपमेंट भी काम। उनसे पूछते हैं इंडस्ट्री ट्रेंड्स और फ्यूचर प्रोडक्शन के हवाले से। अस्सलाम वालेकुम यासिर साहब। जी सर, थोड़ा सा अपना बताएंगे आप अपने बारे में? डेफिनेटली जी, मेरा करियर जो है इस इंडस्ट्री में इट स्टार्टेड इन 2006 और सिंस देन आई एम वर्किंग इन दिस सेक्टर विच इज़ बेसिकली आईटी एंड बीपीओ सेक्टर मेनली। सो बेसिकली आउटसोर्सिंग इंडस्ट्री जो कि पिछले लास्ट 20 इयर्स में जो एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ हुई है पाकिस्तान समेत डिफरेंट थर्ड वर्ल्ड countries including the other South Asian countries, and I'm privileged to be a part of it. So I've seen many highs and lows in this particular industry. I've been through the BPO sector, I've been through IT services and IT staff augmentation. So I've been covering all these domains for the last 16-17 years through working with different companies including IBEX Global, including Architect, Premlinks and OZ Group. I've been working with couple of products as well, including Truck It Easy and which are basically successfully running in the market right now. So currently I'm working at Lukarna Tech. Lukarna Tech is basically a subsidiary of ABM Group. ABM Group is basically a group of 8-9 companies into different sectors. So primarily we have been in the IT cybersecurity sectors since last 40 years. So it's one of the oldest company in the industry working in the IT services sector. So they actually engaged me as a consultant this year, earlier this year, to set up an IT staff augmentation business for them. So we actually formed this company. So I'm privileged to be a kind of a founding member of this company, Lukarna Tech. So the basic objective of this company is to basically bring in more and more business in Pakistan. So obviously to scale up, to provide more employment to more and more people. And we are thinking to actually scale up to 200 people in the next 2 years. So this is our vision for the next 2 years. और इसमें हमारा ज़्यादा फोकस ऑब्वियसली आईटी स्टाफ ऑगमेंटेशन में है, which means that we would like to get more and more dedicated resources outsourced in Pakistan from North American region, Europe, Gulf region and APAC region. So these are the 4 target markets for us. Or since ideally, principally we are a startup, but technically we are not, because it's an old company with 7-8 other group companies working under its umbrella and a lot of diversity we have within the group. So this is a brief introduction. So अभी आपकी यहाँ पे जॉब किस तरह से है, क्या उसको आप देख रहे हैं? देखिए, the basic objective of my position is to basically launch the Lukarna Tech in the market. Okay. ठीक है जी, जैसे मैंने बताया कि for us the market is basically the North American region, Europe, Western Europe, Gulf and APAC region. So we are in a stage of launching ourselves as a premium IT staff and IT services company in the market, as one of the company which actually holds a great experience of getting business from these markets in the past, but in the other fields like in IT, cyber security and IT services and other domains. So हमारा जो objective है वो ये है कि to target the companies in these regions who want efficient resources and who don't care about where they are located, and obviously which would help them manage their costs as well. तो हमारा जो targeted customer है, they are basically the startups, they are basically the small and medium enterprises, the companies which feel and actually have skill gaps. So basically our objective is to bridge the skill gaps. Okay, skill gaps in their company's technical team and provide them a readily available resources to work quickly and become a part of their team. So ये basically objective है कि without incurring any cost on the hiring process or shortlisting candidates, we provide a pre-screen team or maybe resources for any particular skill
which is required by the clients in these regions. Lucarna Tech is focusing on the staff augmentation या staff outsourcing, ठीक है ना, human resource outsourcing. इसका जो पेरेंट कंपनी का काम था वो क्या है? पेरेंट कंपनी जो है वो बेसिकली साइबर सिक्योरिटी में हम लोग बेसिकली सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, प्रोडक्ट है कि उसमें बेसिकली वी आर इनटू सर्विसेज एंड सॉल्यूशंस. ओके, सो पाकिस्तान के शायद ही कोई ऐसा बैंक हो जो हमारा क्लाइंट ना हो. इसी तरह गल्फ रीजन में, मीटा रीजन में वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग पोर्टफोलियो ऑफ कस्टमर्स, बट मेनली अराउंड दिस. एंड देन वी आर ऑल्सो इनटू डिफरेंट बिजनेसेस लाइक ट्रैवल इंडस्ट्री, वी आर इनटू शिपिंग एंड लॉजिस्टिक्स. ठीक हो गया, इसकी अलहदा कंपनी है, ट्रैवल की अलहदा कंपनी है. फिर इसके अलावा वी हैव अ सॉफ्टवेयर कंपनी विच इज़ बेसिकली इनटू द प्रोडक्ट डेवलपमेंट, दैट्स बेसिकली द नेम ऑफ सोशल बाय. एंड देन वी हैव a company which actually imports unmanned aerial vehicles, जिन्हें आप drones कहते हैं, वो import करते हैं और distribute करते हैं. So we have basically eight different companies working in different sectors, okay, and alhamdulillah we have a great history of growth and sustainability for the last 40 years. ठीक हो गया. अच्छा, पाकिस्तान में आप किस तरह से टैलेंट को देख रहे हैं, किस तरह के टैलेंट को आप फाइंड आउट कर रहे हैं, या आपके क्लाइंट्स किस तरह के रिक्रूटमेंट करना चाह रहे हैं? आईटी में करना चाह रहे हैं, डेवलपमेंट में करना चाह रहे हैं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में कौन सी डोमेन की ज़्यादा आपके पास डिमांड है? बेसिकली प्राइमरीली तो एवरीथिंग रिवॉल्व्स अराउंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, विच वी वुड से कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट. लेकिन जब हम अपने आप को प्रेजेंट करते हैं एज एन आईटी कंपनी, तो definitely our focus is to get as many as possible headcounts. So our objective, our target would be to bring in more and more headcounts in our company to work for the clients abroad. ठीक हो गया, ये एक हमारा objective है. लेकिन इसका एक रोड मैप ये है कि obviously you have to pitch your IT services, okay, and when once you get the services you have a team to deliver, and at the same time you see an opportunity to actually allocate your dedicated resources to the clients rather than doing it as a project basis business. You can do it as a dedicated resource augmentation model. So this is basically, our focus is basically on the dedicated resource augmentation model, but yes, we are also providing IT services. So development service भी आप provide कर रहे हैं? अच्छा, ठीक है. So it means it's a combination of development plus staff outsourcing. Exactly. Actually, we have 3 different business functions. एक वो टीम है जो कि basically development करती है. They are basically the software developers. So we have a team to develop the softwares with different technologies for the clients. ठीक है. दूसरा segment वो है जो कि basically focus कर रहा है कि to see if we can explore opportunities and get an outsourced business for the IT staff. और फिर थर्ड सेगमेंट वो है बेसिकली जो कि नॉन आईटी इंडस्ट्रीज में, जिसको आप अभी कह रहे हो कि यू नो विच वुड जस्ट बी आउटसोर्सिंग यू नो स्टाफ टू डिफरेंट सेक्टर्स एंड डिफरेंट skills, like it could be anything, which it could be in accounting, it could be in sales, it could be in kind of solar industry, it could be in different sectors who actually want skills. Okay, but they feel that you know if they get it from the third world countries like us, it would be much more cheaper for them. Don't you think so? It's like not कोई dedicated niche को target नहीं कर रहे. It's basically you know development भी आप कर रहे हैं जी, आप और staff आउटसोर्सिंग भी कर रहे हैं, और स्टाफ आउटसोर्सिंग भी सिर्फ आईटी में नहीं, जी. आप कह रहे हैं कि आप अकाउंटिंग या दूसरे फील्ड्स में भी कर रहे हैं. जी. तो ये बड़ा काइंड ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी इसमें ज़्यादा नहीं है? बिल्कुल ऐसी है. लेकिन आप किसको देख रहे हैं? हम लोग बेसिकली वी हैव स्टार्टेड ऑफ विद आईटी सेक्टर मेनली, लेकिन ऑब्वियसली वेरी सून वी हैव ऑलरेडी मेड सम प्लानिंग, वी हैव डन द रिसर्च वर्क ऑलरेडी इन डिफरेंट अदर सेक्टर्स एज वेल, कि जिसमें हम देख सकते हैं कि जहाँ पे हम स्टाफ again they are जहाँ पे गैप है to bridge that gap of the technical resources required in different sectors, not only in IT sector, but definitely we have to launch ourselves in IT sector because that's our core domain. हम चूँकि हैं ही IT के लोग, तो हमारे लिए वो वहाँ पे accomplish करना is the first benchmark, और फिर उसके बाद definitely to explore other IT में भी क्या जो आपका प्राइमरी फंक्शन डेवलपमेंट के ऊपर है कि स्टाफ आउटसोर्सिंग के ऊपर है? एक्चुअली इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. हम लोग कभी इसको सेग्रीगेट नहीं कर सकते. अच्छा, क्योंकि जो डेडिकेटेड रिसोर्स, बिकॉज देखें अगर आपको डेवलपमेंट करनी है देन यू नीड टू हैव अ इन हाउस डेवलपमेंट टीम.
ठीक है, उसके लिए पूरी टीम आपको चाहिए कि जो हायरिंग भी आपने इन हाउस करनी है, फिर बिजनेस को भी डेवलप करना है, फिर उसकी डेवलपमेंट भी करनी है, फिर इसकी डिलीवरी भी करनी है। और अगर आपने सिर्फ और सिर्फ स्टाफ को आउटसोर्स कर दिया, उसमें तो आपने स्टाफ को फाइंड आउट किया, बिजनेस किया, उसके साथ पैचअप करवा दिया, ठीक है, उसको कर दिया। तो दोनों मॉडल सबसे डिफरेंट हैं। एक्चुअली इसमें बेसिकली इट स्टार्ट्स फ्रॉम द आईटी सर्विसेज एंड सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। अनटिल और अनलेस आपके पास इन हाउस टीम नहीं होगी, यू कैन नॉट अट्रैक्ट कस्टमर्स या आईटी कंपनीज और कंपनीज हु आर लुकिंग फॉरवर्ड टू मेक वर्क इन देयर आईटी साइड और डेवलप देयर प्रोडक्ट्स। एक्चुअली आप में स्किल्स होंगी तो आप आगे बढ़ के कह सकते हैं कि वी हैव दिस पोर्टफोलियो एंड वी कैन एक्चुअली बिकम एन एक्सटेंडेड part of your team. So initially it's all about IT services, which is basically the software development, and we have a team for that as well. Okay, fine. But that works separately. ठीक हो गया, हमें जैसे कोई प्रोजेक्ट आता है तो हम we actually work alongside with them to deliver. तो वो एक काम है। दूसरा काम ये है कि we try to find out the companies who are looking for dedicated resources. तो ये वो एक अलग से एक सेगमेंट जो है हमारा, बेसिकली BD की टीम जो है वो डेडिकेटेड है उस काम को एक्सप्लोर करने में, और डेफिनेटली to launch ourselves as a dependable and a high profile IT staff augmentation company. तो ये इसके लिए एक अलग BD की टीम लगी, लेकिन इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते दोनों चीज़ों को, IT डेवलपमेंट को और स्टाफ ऑगमेंटेशन को, इसको हम डिस्कनेक्ट नहीं कर सकते। Until unless you don't know how to develop a product, how can you actually find appropriate resources for the clients to actually to work as a part of their teams? तो ये हमारा एक टेक्निकल रिक्रूटमेंट का हमारा एक शोबा है, वो प्री स्क्रीनिंग करता है, फिर हम उन क्लाइंट्स का एक पूल डेवलप करते हैं, और फिर बेस्ड अपॉन दैट वी एक्चुअली गेट इन द मार्केट, अप्रोच क्लाइंट्स, और एंड देन वी ट्राई टू अलाइन देयर नीड्स टू आवर पूल ऑफ रिसोर्सेज. So if there is a connect, definitely it's basically a way towards getting that business. पाकिस्तान के इन्वायरमेंट में, पाकिस्तान के जिस तरह से आपको डायनामिक्स का पता है, यहाँ पे आप किस तरह का रिसोर्स देख रहे हैं कि हम देखने वालों को ये बता सकें ये वाली इंटरनेशनल मार्केट में या कंपनी जिस तरह का ये स्किल सेट का बंदा डिमांड कर रही है, इसका पोटेंशियल ज़्यादा है, आप ये वाली स्किल्स को अपनाएं, इनको सीखें, तो आप किस तरह का देख रहे हैं कि आपके क्लाइंट्स जो फॉरेन में बैठे हैं उनको किस तरह का स्किल सेट का बंदा पाकिस्तान से चाहिए? और सिर्फ क्या पाकिस्तान में आप उसकी हायरिंग कर रहे हैं कि आप बांग्लादेश से, श्रीलंका या अदर डेवलपिंग कंट्रीज से भी क्लाइंट्स को मतलब इस तरह से रिमोट हायरिंग करवा रहे हैं? देखिए, जैसे एज फार एज द स्कोप ऑफ या एक पूरा एक स्किल सेट की बात है तो इसमें बहुत डाइवर्सिटी है इस फील्ड में. इट स्टार्ट्स फ्रॉम वेब डेवलपमेंट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट, it includes the UI UX design and branding, लेकिन the trends for the last 2-3 years is towards the data sciences, artificial intelligence, machine learning, I would say it's augmented reality, virtual reality stuff, gaming. So it actually it's more towards that side. जो last 2-3 years से जो trend है मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का, उसका साइज बहुत ज़्यादा aggressively grow हो रहा है. As far as the routine web mobile application development is concerned, definitely that is part of all this, because without that you cannot showcase yourself. Obviously every company needs a web presence, every company needs a mobile app generally, to serve their customers, to sell their products. तो वो तो एक बेसिक चीज़ है ही है, लेकिन इस वक्त जो ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है वो ज़्यादातर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, डेटा साइंसेज वाली साइड पर है. और जहाँ तक हायरिंग की बात है तो डेफिनेटली हमारा फोकस पाकिस्तान पर है. वी हैव अ लॉट ऑफ रिसोर्सेज हियर, सो इट्स नॉट वेरी सूटेबल टू एक्चुअली फाइंड रिसोर्सेज इन इंडिया और फिलीपीन, बांग्लादेश एट दिस स्टेज. आई थिंक एज लॉन्ग एज वी हैव गुड रिसोर्सेज हियर, हमारे पाकिस्तान में बहुत स्किल्ड वर्कर बहुत ज़्यादा है, and young boys and girls are working hard to be a part of IT industry, so that's a positive sign for us. तो हम लोगों का फोकस यही है कि हम अपने मुल्क के जो है ना रिसोर्सेज को मार्केट करें बाहर. ठीक है. तो ये आपकी कंपनी वैसे पाकिस्तानी बेस्ड है कि अमेरिकन है? कहाँ की इसकी मेन ऑफिस कहाँ पे? लुकर्नाटेक का जो हेड ऑफिस है दैट्स इन यूके. सिंस ABM ग्रुप हैज़ इट्स प्रेजेंस इन 5-6 कंट्रीज, जिसमें यूके है, दुबई है, ताशकंद है, वी आर इन टर्की. So we have 4-5-6 and in Saudi as well. So we would like to head office is in Karachi. Then we have 3 offices in Pakistan: Lahore, Karachi, and Islamabad. I work from the Lahore office. So ये हम लोगों का. So technically we are Pakistani based company. Okay. Yeah. So we are also planning. So you don't have any office in
यूएसए, कनाडा? Right now we don't have an office there, but we are planning to open. किस up तरह an से office. टारगेट कर रहे हैं आप उस मार्केट को? रिमोटली कर रहे हैं कि वन ऑनलाइन? किस तरह से आप क्या? देखिए अभी तो डेफिनेटली वी आर यूजिंग डिफरेंट बिजनेस डेवलपमेंट टूल्स एंड टेक्निक्स टू Okay. फाइंड कस्टमर्स देयर, Okay. अप्रोच क्लाइंट्स. इसमें ऑब्वियसली आपकी आउटरीच स्ट्रेटेजी होती है, इसमें आपकी इनबाउंड लीड जनरेशन की स्ट्रेटेजी होती है. तो फॉर दैट वी हैव डिफरेंट ऑब्वियसली बिजनेस डेवलपमेंट डिफरेंट skills in our team who are basically approaching the clients through emails, through social media, through Okay. through direct approaching clients ईमेल्स? through different technology platforms, job portals. Okay. So we have a team जो कि basically इन तमाम segments पे काम करके तो अपनी जो उनका जो targeted persona है of the client, they are targeting them, and then they approach them, they interact with them, and then it becomes our job, the senior people, to actually close the deals with the help of our technical team. ओके, सो अभी जिस तरह से आप ये कह रहे हैं कि डायनामिक्स चेंज हो रहे हैं, डेटा साइंस, एआई, मशीन लर्निंग का ट्रेंड जो है ना वो बड़ा चेंज हो रहा है, इवन कि बड़ी कंपनीज भी यही चीज़ें यूज़ कर रही हैं. तो आप पाकिस्तान से जो अभी ग्रेजुएट्स हो रहे हैं बच्चे, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, आप उनको कौन सी स्किल किस तरह से गाइड करेंगे कि वो फ्यूचर को देखते हुए किस तरह से किस डायरेक्शन को चूज़ करें, या कौन सा रोड मैप, करियर पाथ कौन सा लें? देखिए मेरी नज़र में तो किसी एक डोमेन को पिन पॉइंट करना मुनासिब नहीं है. आई थिंक क्योंकि डाइवर्सिटी इतनी ज़्यादा है, इंडस्ट्री वर्टिकल्स इतने ज़्यादा हैं, मेजर फोकस होना चाहिए टू एक्चुअली टारगेट दी प्रॉब्लम्स ऑफ योर कस्टमर्स, आई वुड से, या जो नीश को आप टारगेट कर रहे हैं, या जो आप समझते हैं कि इफ़ यू कैन प्रोवाइड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, दैट शुड बी योर माइंड सेट. इफ़ यू आर एबल टू प्रोवाइड सोल्यूशन टू अ प्रॉब्लम फॉर अ क्लाइंट, ही विल बी विलिंग टू वर्क विद यू. वो आपको काम भी देगा, वो आपको एंगेज भी करेगा, आपको हायर भी करेगा. सिर्फ पढ़ाई इसलिए करना कि भी मैं कोई कुछ चीज़ सीख के तो शायद मैं उसको सेल कर सकूंगा, ये एक अच्छी अप्रोच नहीं है. अच्छी अप्रोच ये है कि टू अंडरस्टैंड के कॉन्सेप्ट्स हैं क्या, और वो कॉन्सेप्ट किस तरह से हेल्प करते हैं डिफरेंट लोगों को डिफरेंट सेक्टर्स में टू एक्चुअली गेट देयर बिजनेस डन इन मोर एफिशिएंट मैनर. बात को समझ रहे हैं, चाहे वो प्रॉफिट फॉर प्रॉफिट कंपनीज हैं, नॉन प्रॉफिट्स हैं, हर कंपनी का अपना एक विजन होता है. आपकी जो अलाइनमेंट, जो फोकस होना चाहिए वो होना चाहिए कि आप सॉल्व करें किसी भी बिजनेसमैन की जो उसकी पेन पॉइंट्स हैं. तो जो पेन पॉइंट्स को आप टारगेट करें और उसको ट्राई टू बी अ सोल्यूशन टू दोज पेन पॉइंट्स. सो इन ऑर्डर टू डू दैट डेफिनेटली यू नीड टू लर्न फ्यू स्किल्स जो कि आपके पास होने चाहिए. उन स्किल्स को फिर आप लर्न करें अलॉन्ग विद दी नॉट ओनली द मेथड इन्वॉल्व इन दैट प्रोसेस बट ऑल्सो द एंड रिजल्ट्स. तो आपका फोकस होना चाहिए एंड रिजल्ट्स पे. तो मैं ये कभी भी अपने यंगस्टर्स को ये नहीं गाइड करता कि आप बस डिफरेंट टूल्स एंड टेक्निक्स को सिर्फ सीखते जाएं कि भी हम इसको अप्लाई करेंगे कहीं. इनको साथ साथ ये भी पता होना चाहिए कि ये चीज़ें कहाँ कहाँ अप्लाई हो रही हैं और किस किस तरीके से हेल्प करती हैं लोगों को टू गेट देयर वर्क डन efficiently more and improves the productivity. तो अगर एक कोई कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन है, उसका फोकस होगा टू गेट थिंग्स डन एफिशिएंटली. एक पर्सनल यूज़र है, उसका ऑब्वियसली अप्रोच होगी कि ऑब्वियसली टू डू वट एवर इज डूइंग इन अ मच एफिशिएंट मैनर. तो थिंग्स आर डिफरेंट और डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है, डिफरेंट इंडस्ट्रीज़ में डिफरेंट पेन पॉइंट्स हैं. तो अगर कोई बच्चा पढ़ रहा है तो ये आप जैसे असातिज़ा का मेरे ख्याल में एक रोल होना चाहिए कि बच्चों को साथ साथ यूज़ केसेस और केस स्टडीज़ उन्हें बताएं, और उन्हें बताएं कि किस तरह से क्या चीज़ कहाँ अप्लाई होके किस किस्म की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकता है. तो ये एक स्टडी का एक एजुकेशन का हिस्सा होना चाहिए अलॉन्ग साइड द टेक्निकल एजुकेशन जो आप दे रहे हो, या और जो इंस्टीट्यूशन किताबों वाली जो भी एजुकेशन का मतलब आपके कहने का मतलब यही था कि जो भी स्किल आप सीखें उसको सिर्फ और सिर्फ आप अपने नॉलेज तक ना रखें, उसको प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन जरूर करें. बिल्कुल. और इसमें आई वुड लाइक टू ऐड वन थिंग, इसमें आप जैसे जो असातिज़ा है ना, इनको मेरे ख्याल में दे शुड टेक अ लीड ऑन दिस, बिकॉज एट टाइम्स यंग बॉयज गर्ल्स दे डोंट हैव एन ओवरऑल विजन ऑफ हाउ दीज थिंग्स आर हैपनिंग एट द बैक एंड. आपने उनको एक टेक्नोलॉजी पढ़ाई, उन्होंने पढ़ ली, उसके उन्होंने हाइपोथेटिकली कोडिंग सीख ली या और स्किल्स सीख लिए. अब उन्हें ये नहीं पता होता कि एक्चुअल बिजनेस यूज केसेस हैं क्या. बिल्कुल. तो एक्चुअल बिजनेस यूज केसेस और केस स्टडीज़ को लाना, उनको प्रिपेयर करना और उस पर बच्चों को तैयार करना, ये आप जैसे असातिज़ा का एक काम है कि दे शुड हैव दैट एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ देयर एकेडेमिया. और उसका जो भी वो कैरिकुलम डेवलप करते हैं
पर सेमेस्टर होता है, मुझे पता है शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन उसमें एटलीस्ट दे शुड एंगेज देयर चिल्ड्रन टू एक्चुअली वर्क ऑन दोज यूज केसेस, ताकि उन्हें पता चले कि कौन सी जगह पे कौन सी कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, तो इसका एक बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ एक और चीज़ है कि आप मुझे ये बताएं कि कौन सी स्किल्स की डिमांड आजकल ज़्यादा है? जो बच्चे हैं, चाहे डिग्रीज कर रहे हैं, बैचलर्स कर रहे हैं, मास्टर्स कर रहे हैं, एमबीए कर रहे हैं, एमएससी कर रहे हैं, या कोई आईटी में कुछ भी अपनी प्रोफेशनल डिग्री ले रहे हैं, मगर मार्केट में आपके एक्सपीरियंस के मुताबिक डिमांड कौन सी स्किल्स की ज़्यादा है? देखिए आजकल जैसे मोस्ट रिसेंट आपके साथ एक जो रब्ता हुआ वो रिगार्डिंग दी योर इनिशिएटिव ऑन दी डेटा साइंसेस जो आप कर रहे हैं डेटा स्किल्स में, जी। ऑब्वियसली मैंने आपको उस हवाले से कांटेक्ट किया, हालांकि मेरा आपका एक ऑब्वियसली एक वी हैव बीन वर्किंग टुगेदर और एक ताल्लुक अलहदा से है। आई थिंक डेटा साइंसेस आज के दिन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग और इससे रिलेटेड आगे जो भी फील्ड्स आ रही हैं, दे आर बेसिकली गोइंग टू ग्रो। और जो बच्चे भी बेसिक एजुकेशन जब लें, क्योंकि बेसिक टेक्नोलॉजी स्टैक तो सीखना ज़रूरी होता है, उसके बाद दे शुड एक्चुअली आई थिंक शुड टेक मोर इंटरेस्ट इन दीज एरियाज। इस साइड पे ज़्यादा इंटरेस्ट लेना चाहिए, फ्यूचर इसी चीज़ का है, क्योंकि डेटा साइंसेस लीड्स टू अप्रोप्रिएट डिसीजन मेकिंग्स। तो डिसीजन मेकिंग जो है ना, वो डायरेक्शन सेट करती है कंपनीज की। तो ये बेसिकली एक स्टेप है। आपने डिसीजन मेकिंग में किस तरह से असिस्ट करना है अपने कस्टमर को या अपने क्लाइंट को या अपनी कंपनी को, दैट इज़ थ्रू डेटा साइंसेस। यू हैव टू हैव डेटा, देन यू हैव टू एनालाइज दैट डेटा, और फिर उसके बाद आपने उसके अपने बताना है कि इससे व्हाट डू यू डिराइव्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर डेटा एंड व्हाट शुड बी द नेक्स्ट डायरेक्शन in different areas of a business. So I think that is basically something which new generation should focus on. ऑन डेटा साइंस। अच्छा, अभी ये आप जो हमें बता रहे हैं, ये आप अपने प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस से बता रहे हैं कि मार्केट में जिस तरह से आपके क्लाइंट्स आप देख रहे हैं नॉर्थ अमेरिका में, वहाँ पे क्या वहाँ पे इसकी डिमांड आपको मिल रही है? आप उसकी बेसिस के ऊपर कह रहे हैं कि आप एक कुछ फ्यूचर के ट्रेंड्स को देखते हुए ये कह रहे हैं? बोथ। देखें, ये मैंने भी आपको बताया कि these technologies cannot be disconnected. We cannot say कि अगर कोई बंदा वेब डेवलपमेंट का एक्सपर्ट है तो डेटा साइंसेस में अपने आप को एक्सपर्ट नहीं बना सकता। उसे वो भी सीखना चाहिए बिकॉज दैट इज़ ऑल्सो पार्ट ऑफ बिजनेस। लेकिन जो डेटा साइंसेस वाली साइड है वो इसलिए मोर इफेक्टिव है कि दैट इज़ हेल्पिंग बिजनेसेस टू मेक गुड डिसीजंस। तो मेकिंग गुड डिसीजंस मीन्स दैट यू आर मूविंग टुवर्ड्स ग्रोथ, प्रॉस्पेरिटी। इफ़ यू मेक अ रॉन्ग डिसीजन, उसकी कॉस्ट बहुत ज़्यादा है आजकल। यू कैन नॉट वेस्ट योर टाइम in doing wrong things and then actually recorrecting them and correcting them actually all the time. So data sciences helps you make appropriate decisions. और ये इस वक्त globally भी these are basic, जहाँ अगर job site पे भी आए तो ये these are much higher in terms of their wages. तो इसकी wage rates भी बेहतर है दूसरी डोमेन से। पाकिस्तान में आपको कितना मिला है? यहाँ पे पोटेंशियल है? यहाँ पे कुछ डिमांड तो ऑब्वियसली डेवलप्ड कंट्रीज में ज़्यादा है इसकी, ठीक है ना? तो पाकिस्तान में है कुछ ऐसी कंपनीज जो इसके ऊपर काम कर रही हैं, जिनको डेटा साइंस और रिलेटेड स्टाफ चाहिए, या इस तरह से कुछ? पाकिस्तान में एक लिमिटेड स्कोप है क्योंकि पाकिस्तान की मार्केट इन इटसेल्फ ही एक छोटी मार्केट है। पूरी दुनिया का के जीडीपी में पाकिस्तान का कोई बहुत ज़्यादा सिग्निफिकेंट, आई थिंक वी माइट बी लेस देन 2%, और पाकिस्तान के पास इतना अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, लेकिन पूरी दुनिया में बहुत है। एंड स्पेशली दी कंट्रीज़ जो कि प्रॉस्परिंग कंट्रीज़ हैं, जो कि इस चीज़ को समझ गए हैं कि अच्छे फैसले, अच्छे आउटकम्स को लेके आएंगे, तो दे हैव अ मच मोर वैल्यू फॉर दोज रिसोर्सेज जो कि उनको हेल्प कर सकते हैं टू मेक गुड डिसीजंस। एंड गुड डिसीजंस आर मेड अपॉन द बेसिस ऑफ द डेटा यू हैव एंड देन हाउ यू एनालाइज दैट। अब लास्ट में देखने वाले को आप अपनी करियर से, पूरे करियर से आप अपने मतलब एक लाइफ एडवाइस या करियर एडवाइस आप क्या करना चाहेंगे कि वो कौन सी गलतियाँ जो शायद आपने ज़िंदगी में की हों, तो आप ये चाहें कि उनको बता सकें कि ये वाली गलतियाँ नहीं करनी, वो आप अपने जो आने वाले लोग हैं, यंगस्टर्स को क्या बताएंगे? आई थिंक द बिगेस्ट मिस्टेक विच आई फील, क्योंकि अक्सर हम लोग करते हैं, मैं भी ऑब्वियसली आई कैन सी माई सेल्फ इन दैट थिंग एज वेल, कि हम लोग जब कोई हमें फेलियर होता है तो हम उसको वी टेक इट ऑन आवर सेल्व्स, और फिर हम एक किस्म के एक फेज़ में चले जाते हैं जो हम अपने आप हाइबरनेट कर लेते हैं विद अ माइंडसेट कि शायद हम एक फेलियर हैं, एंड दैट इज़ इट। तो आई थिंक फेलियर्स को पॉजिटिव लेना चाहिए,
life is not very easy, but it's not impossible. You know, it's a part of tough and good and tough sides हर तरह से आती हैं ज़िंदगी में आइज़ दोस्तों. I would definitely I would advise my youngers to stay motivated whenever you face a failure. Learn from those failures, try to improve yourselves, come out of the failure mindset और कॉन्फिडेंस बूस्ट करें अपना. और कॉन्फिडेंस बूस्ट करने के लिए बहुत ज़रूरी है कि कंसिस्टेंसी हो. कंसिस्टेंसी इज़ द की कि कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स करें, ट्राई टू लर्न न्यू थिंग्स, सी वेयर द डेफिशिएंसीज आर, जो कमियां रह गई, जो वीकनेसेस हैं उनको ब्रिज करते जाएं. तो एक वक्त ऐसा आएगा कि आप एक सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट हो जाएंगे. और सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट होना आपको प्रोफेशनली भी स्ट्रॉन्ग कर देता है. जनरली हमारे यहाँ पे एक ट्रेंड होता है कि पीपल ट्राई टू लर्न एवरीथिंग एंड एनीथिंग बट दे आर नॉट द मैटर एक्सपर्ट. तो ये भी एक बड़ी प्रॉब्लम है हमारे जैसे ममालिक में कि हम लोग जो है ना वी वांट टू लर्न एवरीथिंग. नहीं, ऐसा नहीं करें. अपनी फील्ड को चूज़ करें, थॉटफुली उसको परसू करें और फिर ट्राई टू अचीव गोल्स इन दैट पर्टिकुलर फील्ड. एंड डोंट फियर अबाउट फेलियर्स. फेलियर्स कुछ नहीं होते, ये एक ज़िंदगी का हिस्सा है. एवरीवन हैज़ टू फेस फेलियर्स. आई थिंक जो लोग फेलियर्स फेस नहीं करते वो ज़्यादा आई थिंक दे आर more I would say vulnerable to a bigger failures in their lives rather than those जो के शुरू से ही कुछ ना कुछ failures देख रहे होते हैं और फिर efforts करके overcome करते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं. तो I would say कि confidence is the key and confidence comes from your expertise and expertise comes through your consistent hard work in a particular domain. तो इसको लेकर चलें तो I think this is something which will help आर यंगर फोक्स. और ये गलतियाँ हम लोगों ने भी की हैं ज़िंदगी में, कहीं रुके हैं, कहीं घबराए हैं, कभी पीछे हटे हैं. तो वो यू लूज मैनी अपॉर्चुनिटीज़ व्हेन यू आर इनटू अ माइंड सेट ऑफ बीइंग अ फेलियर. सो फेलियर से ना घबराएं, आगे बढ़ें, सीखें. देयर इज़ नो एज टू लर्निंग. छोटे हैं, बच्चे हैं, आजकल तो बच्चे बहुत दे आर वेरी इंटेलिजेंट, टीनेजर्स. तो आई डोंट सी एनी एज टू एक्चुअली वर्क ऑन न्यू थिंग्स. सो फॉर एवरीवन including myself or even elderly people, younger ones, learn करें और आगे बढ़ें. जी, लर्न करें और आगे बढ़ें और फेलियर से घबराना नहीं. कामयाबी उन्हीं का ही साथ देती है जो कंसिस्टेंसी के साथ अपने इस सफ़र को जारी रखते हैं और आने वाली परेशानियों से घबरा के रुकते नहीं. इस एडवाइस के साथ अब हम इजाज़त चाहेंगे यासिर साहब से. यार साहब बहुत शुक्रिया, आपने बुलाया, हॉस्पिटैलिटी का बहुत शुक्रिया. और इसी के साथ यासिर साहब भी थैंक यू जी. इट्स अ ग्रेट ऑनर टू बी विद यू. यू आर आई थिंक यू आर वन ऑफ द मोस्ट लर्नड पीपल ऑफ योर एज ग्रुप. आई सी दैट दैट वे एंड अल्हम्दुलिल्लाह आई सी द काइंड ऑफ मोटिवेशन जो कि इज मिसिंग इन मैनी यंगर पीपल और प्रोफेशनल्स. वो घबरा जाते हैं तो फिर वो एक सियासी बात नहीं हो जाएगी, मतलब घबराना नहीं है. मतलब मैं वो बात यूज़ नहीं करना चाह रहा, लेकिन ये है कि आई सी दैट स्पार्क इन यू. तो इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको भी प्रॉस्पर करे, आपकी कंपनीज को भी, ऑब्वियसली आपकी जो अप्रोच है टूवर्ड्स मेकिंग अदर लर्न मोर एंड बेटर स्किल्स टू फ्लरिश इन देयर लाइफ. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू सर, बहुत शुक्रिया.